Taj for me is actually a dream coming true. क्या हम सीजन 2 में वो सॉफ्ट एंड रोमांटिक सलीम को कहीं ना कहीं मिस करने वाले हैं? आपको मौका ही नहीं मिलेगा मिस करने का. I've done a decent job at understanding what Salim looks like and feels like. Everybody knows the actor that Naseeruddin Shah is, the legend that he is, but I feel like the human that he is even grander and bigger, and that makes the life of a co-actor, his co-actor, much easier and much more confident and much more prepared. तो जब पीरियड ड्रामा करते हैं शूट, और स्पेशली जिसके अंदर ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है जो हम डेली लाइफ में नहीं बोलते, हम जब एक दूसरे से ही बात करें तो इसी तरह से पंगे लेते थे, मस्ती करते थे, तो भी ऐसे वर्ड्स यूज करते थे? नहीं, तब तो बोलते थे चल हटे भाग यहाँ से. नहीं, तब तो बोलते थे पहले इसका मतलब समझाओ. हाँ. ये जो हम बोलने वाले हैं पहले इसका मतलब समझाओ हमको, और उसके बाद बताओ कि कैसे बोलना चाहिए, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. वेल डन यार, मजा आ गया. हाय गाइस, माय नेम इज तोनाक्षी कालरा, यू आर वाचिंग ENT लाइव, और आज मैं उस कास्ट के साथ बैठी हूँ जिनका सीजन 1 आया था तो हम सबने बिंज वॉच किया है, और मैंने तो करके खत्म कर दिया था फटाफट से, और क्योंकि मुझे रिव्यू भी करना था, ऑफ कोर्स दैट्स माय जॉब. सो मैं बैठी हूँ ताज रेन ऑफ रिवेंज की कास्ट के साथ. ताज डिवाइडेड बाय ब्लड वाज द फर्स्ट सीजन. हाय आशिम. हाय Sauraseni Maitra. थैंक यू सो मच. वाओ, वेल डन यार, मजा आ गया. सही दिया. थैंक यू. सो गाइस, वेलकम टू दिल्ली. आप तो दिल्ली से ही हैं. किस तरह की फीलिंग होती है जब दिल्ली आते हो, अपने घर में आते हो, लोगों से मिलते हो? मतलब आई नो टिपिकल लोगों से, रिश्तेदारों से तो शायद नहीं मिल पाते क्योंकि आप लोगों का स्केड्यूल ऐसा होता है, बट फिर भी कैसा लगता है दिल्ली आके? It's always good to be back home. I enjoy being in Delhi. It feels like ये अपना ही है. हाँ, it feels like home. अपना इलाका है. I mean, it is home. You tell me, आप कितना दिल्ली आते हो? आपका आना जाना लगा रहता है? I was recently in Delhi in I think last November. So and I went to Agra as well. And I think Delhi is so rich in its culture, its architecture, and everything. Its food. So I love coming back. I always love coming to Delhi. I think हर चीज में फूड सबसे ऊपर आता है. हाँ, of course. Let's be honest about it. She's from Bengal. Yeah, I'm from Bengal. Yeah. So I think Kolkata and Delhi are these two major cities in India that have the best street food. That's true. I couldn't agree more on that. Aashim, आप foodie हो? Please, मैं बहुत बड़ा foodie हूँ, but I control myself sometimes. क्योंकि ऐसा यहाँ के पिघल जाते हैं. हाँ, होता है ना. घर का खाना खाने को भी मिलता है. I agree. वो अलग feeling है, वो comfort food होता है. There's nothing like home food. That's true. So आज दिल्ली आए हो ताज सीजन 2 के प्रमोशंस के लिए. पहली बात तो ये कितने बिजी हो? यार अभी तो बिल्कुल फ्री हैं. Really? तो तभी आके प्रमोट कर रहे हैं. I'm glad. Yeah, but now it's tonight it drops at 12. Yeah. And I can feel the anxiety kicking in. I can feel the adrenaline rush. I'm a little nervous. सीजन 1 इतना मतलब हिट रहा, मुझे लगा शायद अब सेकंड टाइम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो बढ़िया होने वाला है. उल्टा होता है ना तोनाक्षी, बिकॉज सीजन 1 अगर इतना अच्छा हो जाता है तो फिर सीजन 2 की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है. और अब अभी 2-3 दिन पहले तो यही बोल रहे थे कि नहीं सब सही है, it'll be all good and I hope it'll be good. But then closer to we're approaching the night, I think I'm just getting a little nervous now. But it's fine. There's good nervousness. मुझे एक बात बताओ, क्या हम सीजन 2 में वो सॉफ्ट एंड रोमांटिक सलीम को कहीं ना कहीं मिस करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं. नहीं करने वाले? नहीं, बिकॉज आपको मौका ही नहीं मिलेगा मिस करने के लिए. हम आपको ऐसे पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं. You'll feel like this is a different world altogether, and it's going to be exciting. Okay. You tell me, आपकी एंट्री थोड़ी लेट हुई है ताज में, so किस तरह से ऑन बोर्ड आए ताज के लिए? How did it happen? और किस तरह की वाइब थी सेट पर? Taj for me is actually a dream coming true, and यार actors ना, at least for me I can say this, I'm a very greedy actor. So I don't want to miss out on anything. I don't want to miss out on any good role, but unfortunately at that time, but now fortunately, unfortunately when the first call came to me, I was shooting for something in Kolkata and it was not possible for me to send the self test at that time. And then when the next call came, I was again shooting for something and our hours were very hectic and hours were pretty long. So I couldn't send my self-test even then. But luckily, I think I believe in destiny, that what's meant for you, if you really, really want it from the bottom of your heart, you will get it. So when the third and the final call came, I was actually shooting in Bombay for something else, and
went for the audition, and I think I'm really, really lucky that my director himself was present there, Vibhu Puri, and he made the job so much easier. In fact, I got to meet our showrunner William as well, and these two people actually helped me. अच्छा, जब पीरियड ड्रामा करते हैं शूट, और स्पेशली जिसके अंदर ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है जो हम डेली लाइफ में नहीं बोलते, हम तो ऐसे नहीं नॉर्मल बात करते हैं, ऐसे अभी हम कर रहे हैं, बट वहां पर तो ऐसे तौहीन टाइप के हम तो ऐसे भी घर पे बात नहीं करते। हाँ, नहीं करते। मैं तो नहीं करती। इतनी तहजीब से तो कभी बात नहीं की हमने। इतनी तहजीब हमें शो ने सिखा दी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो जब सेट पर होते थे, जस्ट टू बी इन द कैरेक्टर, और मे बी इस तरह की वाइब होती थी कि जब एक दूसरे से ही बात कर रहे तो इसी तरह से पंगे लेते थे, मस्ती करते थे, तो भी ऐसे वर्ड्स यूज करते थे? नहीं, तब तो बोलते थे चल हटे, भाग यहाँ से। नहीं, तब तो बोलते थे पहले इसका मतलब समझाओ। हाँ। ये जो हम बोलने वाले हैं, पहले इसका मतलब समझाओ हमको, और उसके बाद बताओ कि कैसे बोलना चाहिए, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। एपिग्लॉटिस से नहीं आए जब तक तो मजा नहीं। हाँ जी, तख्त। नो, से इट, यू से इट वेरी तख्त। तख्त। भारी है, वेरी भारी है। हाँ, अभी ना मैं बताती हूँ, वैसे मुझे ना कुछ टाइम से थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज से लगाव सा हुआ है, और वो इसलिए हुआ बिकॉज माय फ्रेंड इज मुस्लिम इन ऑफिस, ही इज अ कोलीग, और उसकी उर्दू इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम लोगों ने ना इंस्टाग्राम पर एक सीरीज शुरू कर दी कि टीचिंग उर्दू टू अ पंजाबी फ्रेंड। तो वो मेरे लिए 5-6 वर्ड्स लेकर आता है, और फिर मैं उनको गेस करती हूँ, और फिर वो मुझे रियल मतलब बताता है। That's so cool. Nice, but you should also, there's a lot of pages on Instagram like community with a K. और कहीं जैसे रेखता है, जो it has a lot of nice, like all the nice poets and shaires, and तो उसकी काफी शायरी उसमें आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत जबरदस्त है। मजा आता है ना, हमारे भाई साहब शायरी के शौकीन है। हाँ, शौकीन है। नहीं, बट वो भी अब सलीम प्ले कर रहे हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं वो तो आपके अंदर आ ही जाता है ना। तो इसी तरह से प्रेप भी किया था इस कैरेक्टर के लिए सलीम के? I mean, चाहता तो था कि मेरे को और थोड़ा समय मिले इसके लिए, बट वक्त इतना था नहीं मेरे पास I had about a week to prep for this character, and because I had signed it only then and I was shooting for something else, and then I had to straight away get to Taj and start shooting and travel to Gujarat. तो वो एक हफ्ते के दौरान जितनी prep हो पाई pre the shoot वो हुई। उसके बाद I think the directors and my showrunner William just held my hand and just took me through it, and wasn't easy. Yeah. But I hope I've done a decent job at understanding what Salim looks like and feels like. Yeah. I mean, the first season has worked well, so True. it's a good start. Yeah. Hoping second season does something even bigger. Yeah. No, I can assure you did really well as Salim. We did the review and we were all praises for all of that. For all the characters in fact that time. बाकी सीजन 2 देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, और फिर बताएंगे, आपको ट्वीट भी करके बताएंगे और वैसे ही बताएंगे कि कैसा लगा। बट शायद आज रात ही देख लेंगे, क्योंकि आपको रिव्यू भी तो करना होगा। Yeah, most probably I'll try to watch it. Please do. बाकी आप मुझे बताओ कि जब आप नजीरुद्दीन शाह जैसे वेटरन एक्टर के साथ आप काम करते हो, जो अपने क्राफ्ट में लाइक ही इज सो गुड, तो कहीं ना कहीं अब तो सेकंड सीजन तक तो चलो आदत हो जाती है, उनके साथ आप काम कर रहे हो, इतने सारे सीन्स किए, बट जब स्टार्टिंग में शुरू किया अपने शो करना, तो कहीं ना कहीं इंटिमिडेटिंग सा फील नहीं होता था? Yeah, Naseer Saab, I mean, everybody knows the actor that Naseeruddin Shah is, the legend that he is, but I feel like the human that he is even grander and bigger, and that makes the life of a his co-actor, much easier and much more confident and much more prepared and very hands-on, because when you are standing in front of Naseer Saab, especially playing Akbar, which is a magnanimous character in itself, there's so much authority in it, you better be prepared and you better have your best game on and you better put your best foot forward, because there is no room for mistake. When you know that you have scenes with Naseer Saab, then you better have everything everything well prepared. So that way I think it's amazing to see how his work ethics are, how he conducts himself on and off stage. He's always like up for rehearsals. He wants to keep rehearsing, so this childlike, he's still so passionate about his craft that there is only to learn from him, and that experience I'll just never want to forget and always keep very close to my heart.
ओके अच्छा आप बताओ मेहरुनिसा के लिए प्ले करना था कहीं ना कहीं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब इस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हो इट्स नॉट लाइक एनी अदर ड्रामा दैट यू आर डूइंग इट्स अ पीरियड ड्रामा एंड ये कैरेक्टर रहा है रियल लाइफ में भी तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज एन एक्टर Look, when you're shooting for a historic drama in today, I think it's very important. It in itself is a challenge, right? And because you have to put in that extra effort to make the show and to make these characters relatable even in today's time. And and especially when you play a character who holds so much of historical significance. We know how Noor Jahan goes on to, like, is one of the biggest and most powerful women that Indian history has seen. Yeah. So that in itself is a huge responsibility. अच्छा आशिम अभी ताज तो अभी आया है फर्स्ट सीजन भी अभी आया है मैंने आपकी जर्नी ना क्लोजली फॉलो की थी तुम बिन 2 के टाइम से अच्छा मुझे याद है उसमें क्या होता था आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट 2 एक्टर्स थे आदित्य और आप और हम 2 बहनें हम सारे शो साथ बैठ के देखते हैं ठीक है हमेशा हमारे साथ ऐसा रहा है कि जिस शो में भी जिस फिल्म में भी 2 एक्टर्स है तो एक उसको बहुत पसंद आता है और हमेशा ऐसा होता है कि कोई सेम हम दोनों को नहीं पसंद मुझे आता। पता था आप यही कहेंगी कि दोनों बहनों को मैं पसंद लाया हूं नहीं क्या जरूरत थी आप भी ना व्हाट अ कॉन्फिडेंस कम ऑन मैंने कल उसको बताया भी ऐसे मैं कहा तुझे याद है तुझे आदित्य सिंह बहुत पसंद है मैंने कहा मैंने कहा साथ वाला कौन था कह रही आशिम गुलाटी मैंने कहा मैंने कहा कल उनसे मिलना है कह रही वाह यार मतलब सीरियसली ये चीज हुई थी तुम बिन 2 के टाइम में जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो हमने अपना अपना फेवरेट पसंद कर लिया था और हम उसी के लिए power of manifestation. Power of manifestation. एंड ये हमेशा ऐसा हुआ है हमारे साथ जो भी शो में 2 लीड एक्टर्स रहे हैं जो उसको पसंद आएगा उसके दूसरे वाला मुझे पसंद आता है So good that you don't go for the same guy, huh? Never happened. पता नहीं। Nice. तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, it's like that, no? And that's why देखो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और वो नहीं आई है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ आके बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। सुन लिया? So मैंने बोला कि मैंने आपकी जर्नी पहले से फॉलो की है और you are one of those actors जिन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि फिल्म्स करनी है तो फिल्म्स ही करनी है, सीरियल्स नहीं करने। क्या वो एक आपकी वॉलंटरी चॉइस थी कि ऐसा करना है मुझे सब कुछ करना है या फिर इट जस्ट हैपेंड तो आप लेते गए यू जस्ट वेंट विद द फ्लो सी at that time there was not actually OTT was not even rampant the way it is right now and you weren't getting actually it wasn't even there you weren't getting as many films at least for the newcomers and people from outside the industry we weren't getting as many there weren't as many doors open for us so there's 2 things to it yes जो भी आता रहा वो मैं करता गया because काम से बड़ा होता नहीं है और तो I just wanted to work and I just wanted to be busy and the other thing is yes it was conscious because I always thought that I don't want to restrict myself to a particular platform because eventually what happens is that I'm either whether it's a television show or whether it's an OTT platform or it's a theatrical film you are still working you're constantly putting yourself out there and then you're just making mistakes or you're doing however you are but it's work by the end of the day and I believed in characters and stories and people so for me it was very important to just keep working and keep doing the best of my from as much as I could because whatever I've done I've never regretted it and I have no regrets about saying that because I feel like it's all these are all my choices these are my decisions and I take full credit for it and I feel like I've only learned and grown and every project that I've ever done every ad that I've ever been in every little thing that I've done is actually not little it's big it's big for me and it's not small from any angle and I didn't never want to restrict myself from anything that we call art because eventually I'm just learning and I'm growing and everything I do I grow from it and I learn from it and move forward
So बट it's वो कौन सा प्रोजेक्ट रहा है जो दिल के सबसे करीब रहा है, मतलब हम इतना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, हर कोई करता है, जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा तुमने यहाँ जॉब की है, बट कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ के लिए मुझे लगता है कि आई फील वेरी प्राउड कि आई वर्क देयर। यार हर एक यंग एक्टर का, और एक इन माय केस आई वांटेड टू एक्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, सो एक बच्चे का एक सपना होता है कि वो अपने आप को एक बड़े पर्दे पर देखे, अपने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे। बम्बई आके अगर एक दिन जब हम आए थे तो अपने सब आंखों में सपने लेकर आए थे, हमारे भी ड्रीम्स थे, तो जब रोड पे जाते थे और वी वर क्रॉसिंग दैट जुहू सर्कल, एंड तो वहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती थी, कभी अक्षय कुमार की, कभी सलमान भाई की, कभी एवरी बिग एक्टर्स। तो लाइक यार एक दिन मेरी भी होर्डिंग लगेगी यहाँ पर और मैं भी अपने आप को देखूंगा इस बड़े पोस्टर पे। तो वो टाइम मुझे याद है जब मेरी आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट इट एंड बी लाइक one day, and that happened with Tumbin. And Tumbin is going to be always going to be a very special film and very close to my heart. And today I can proudly say that with Taj season 1 Z5, we had massive posters all over the city. Not one but many, and I think I've not seen any film or any show that has such a long run of having the posters on the roads as there has been for Taj season 1. And I was so proud, and I was just in my head, I'm like, look ma, you should I made it. Worked hard and you deserved every bit of it. So that feeling is not really a feeling, it's an emotion that can only be felt by a young boy who has come a long way to become a man, and looking at his dreams come true, and this is nothing less than that. The show has given me so much love, and I'm so happy that people have accepted it and appreciated it the way they have. So I don't know, I mean I could go on and on about this, but yeah, I'm very happy. We can see that like कितना बड़ा सपना था और वो जब पूरा हुआ तो कैसा लगता है जब आप खुद को बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखते हो एंड लोग आपको लेकर तारीफें कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर की तारीफें कर रहे हैं. सच अ गुड फीलिंग एंड दैट वी कैन डेफिनेटली सी इन योर आईज. सौराशिनी, यू टेल मी, आपने बंगाली इंडस्ट्री में बहुत काम किया है. हाउ हैज द जर्नी बीन? लाइक हैज इट बीन फुलफिलिंग? बहुत चैलेंजिंग रही शुरुआत में? हाउ वाज इट लाइक? Look, unlike Aashim, I never really wanted to be an actor. I come from a family of teachers. मेरी दादी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, मेरे पापा भी सेम एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं. In fact, my mother always wanted to join entertainment industry. She always wanted to be an actor, and so when I was auditioning for my first film, and I remember I think I was 13 years old, and I began my career as a child model. So I was like, okay, fine, I'll go for this audition. I don't know anything about acting, but I've always been a very filmy kid. And I've always been a movie buff. So I went for that audition, and I remember the casting director had told me that, beta, life mein aur kuch karna, bas actor mat banna. Casting director ne bola. Okay, my heart was broken, but I was like, हाँ ठीक है, मुझे बनना भी नहीं. Okay. But still, please just let me know ki, what happens, what do you have to do in front of the camera. And that same guy later called me some 3 months later and said that Vishal Bhardwaj has seen your audition and he has roped you in for this part. And I think that was an opportunity that just fell right on my lap. But what I did with my opportunity later, that was more important. So even when I was shooting for Chittagong, I didn't really want to become an actor. But it happened during my second film when I was shooting in Bombay. That was my first outdoor without my mom or anyone. I was shooting for America, and I fell in love with the magic of it. Of not just what happens in front of the camera, what happens behind it. It was so engrossing, so enchanting, and so magical. And I just knew that this is what I want to do. And then I started working in Bengali film industry, and with, I think for my the first audition for my Bengali film, it came easy. But later, the struggle began.
The struggle begins much later, I think, when people accept you. Yeah. That's also one kind of a struggle. It's very important for you that, you know, the audience, your industry, they accept you. And once they accept you, they keep on expecting more and more. And yeah, so when I began my career, I didn't really have that kind of a struggle, because people didn't really have any fixed notion about me. But now with every project, I think this zeal to perform better, to just become an actor, to grow more, to prove more is more. Yeah. और अब ताज किया है दोनों ने. हाँ जी. और इट्स बिन अ वंडरफुल सीरीज. जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट सीजन इतना हिट था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था नहीं किया था एज एक्टर्स कि यू आर मेकिंग समथिंग बिग जिसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा और लोग वेट करेंगे सेकंड सीजन का. एंड आई बिलीव सेकंड सीजन आया भी जल्दी है काफी, मतलब इतना जल्दी हमने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था एज एन ऑडियंस अगर मैं बोलूं. बट इट्स कमिंग नाउ एंड पीपल आर प्रीटी एक्साइटेड. जैसे ही सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो कहीं ना कहीं हर एक की एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी. एंड आई वाज जस्ट चेकिंग द कमेंट्स. आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट और व्हाटएवर यू से कि जिसका ट्रेलर आता है कुछ भी आता है मैं सबसे पहले नीचे जाती हूँ और कमेंट्स पढ़ती हूँ कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं. एंड आई कैन डेफिनेटली से कि ताज को लेकर वो चीज कहीं ना कहीं दिख रही थी. और सलीम को लेकर तो वो क्रेजीनेस थी कि अब तो वो इंतकाम लेगा और ये होगा और वो होगा. तो दैट इज देयर. तो लोगों की होप्स बहुत ज्यादा है ताज सीजन 2 से. एंड आई रियली होप दैट इट डज रियली वेल. बस इसके साथ मुझे ये जरूर बताते जाना कि कितने सीजन्स और आने हैं, कितनों की डील हो चुकी है. देखो अगर ये जो कैमरा के पीछे बैठे हैं ना, उन लोगों से पूछो प्लीज, क्योंकि हम लोगों को तो मुझे तो फुल लाइफ ताज करना है. हाँ, अरे यार मेहरुन्निसा नूर जहां बन के रहना है. who wouldn't want to. और इनकी जर्नी भी बहुत लंबी रही है, तो मुझे लगता है कुछ सीजन्स तो आ सकते हैं आराम से. हाँ, वैसे भी ताज पहला, the first season was about Akbar's reign and establishment of his 3 sons and so on. And then second season is about Salim coming back and his hopefully, or I don't know if he becomes king, maybe not. Yeah. Then later, I mean Shah Jahan, and then so on. I mean there's a lot to do with Mughals. तो numbers नहीं बता रहे हो कि कितने seasons हैं, but बता रहे हो कि आ सकते हैं. अगर हमें पता होता हम बता देते, लेकिन जिस दिन but let's put a seed and say that inshallah चलते रहे. इंशाल्लाह चलता ही रहे. चलो, we hope so. But guys, all the very best for the season 2. I really hope that it does really well, even better than the season 1 did. And it was lovely chatting with you both today. You guys are twinning. I don't know ये आप लोगों ने decide करके पहना था blue or what? Really plan? No. Okay, बड़ा अच्छा लग रहा है. Thank you. Thank you for your time. बहुत मजा आया आपसे बात. Thank you so much. Thank you so much.